हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल आर्ग लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। एक क्वेश्चन आया था 2026 28 जनवरी में जेई मेन एग्जाम पे। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज। इसमें चार रिएक्शंस दिए गए हैं। चार रिएक्शंस जिसमें जो मेजर प्रोडक्ट होंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होंगे, और वही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन सा बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, कौन सा एसिड स्ट्रांग होंगे वो आपको डिसाइड करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एसिडिक स्ट्रेंथ दैट मींस इट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट रिएक्शन है एनिलीन। ये वेल नोन रिएक्शन है, सैनमेयर रिएक्शंस, NaNO2 और कॉपर साइनाइड। सो फर्स्ट ये डाइल्यूटेशन हो गए, साइनाइड रिएक्शन होंगे, उसका बाद उसको अगर एसिड कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे व्हिच इज बेंजोइक एसिड। सो दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज नंबर 1 और ए। सेकंड रिएक्शंस है CH3 CH2 CHO। टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करोगे तो उसमें एक कार्बन कम होकर आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे व्हिच इज 1 कार्बन लेस। दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज बी। I am not going to discuss the mechanism of these reactions like Sandmeyer reactions, Tollens reagents. This is not the part of this question. ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हम डिस्कस नहीं करते हैं। थर्ड है CH4 plus O2 in presence of sodium dichromate Na2Cr2O7। ये आपको देंगे फॉर्मिक एसिड। आप खुद से स्टडी कर लेना कैसे देंगे। फोर्थ रिएक्शन इज ऑल्सो ए वेरी फेमस रिएक्शन, इट इज नेम्ड एज रिग्नर्ड रिएक्शन। बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज बेंजाइल एंड दिस इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड। It reacts with carbon dioxide, so this is minus, this is plus, so this will be phenyl acetic acid. So out of these four, which one having the highest acid strength and which one having the lowest acid strength, we have to mention is this category, out of which four the answer is correct. acid strength क्या है? डिपेंड्स ऑन नंबर 1 है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितने स्टेबल होंगे उतना ही वो एसिड स्ट्रांग होंगे और हार्ड एसिड होंगे। कॉन्जुगेट बेस कब स्टेबल होंगे? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑक्सीजन डिलोकलाइज्ड, तभी ये इंटरमीडिएट स्ट्रांग होंगे। फॉर सिंपल एग्जांपल मैं बेंजोइक एसिड लेता हूं COOH, इसका कॉन्जुगेट बेस जो होंगे वो है बेंजोइट होंगे। सो रिमूवल ऑफ एन प्रोटॉन विल गिव इट कॉन्जुगेट बेस, सो दिस इज माइनस, सो CB। अभी इस फिनाइल पे अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे तो इसमें माइनस ज्यादा हो जाएंगे और ये अनस्टेबल होंगे, दैट मींस इट इज रिएक्टिव होंगे। और जब रिएक्टिव होंगे वो प्रोटॉन और कोई भी सब्सट्रेट को, इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अटैक करेंगे तो ये इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये स्टेबल नहीं होंगे। सो it is not stable if electron donating group is here or any substrate which increases the electron density of this carbon to oxygen. If electron withdrawing group is here, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कार्बन से, ये ऑक्सीजन से खींच के रिंग पे लाएगा या इस बॉन्ड को इधर तक लाएगा, वो स्टेबल होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ और इस रिंग की तरफ बाय सम मेथड्स, either minus I or minus R effect or hyperconjugation, whatever it is,
This if this electron density decrease, that means oxygen is less prompt to attack hydrogen or other electrophile. It means it is stable. And that conjugate base is stable means acid is strong. So कि इधर इलेक्ट्रॉन रिटर्न ग्रुप होंगे तो एसिड स्ट्रांग होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो एसिड वीक होंगे. So I am taking one more page. This is acetic acid, COOH. Let's see its conjugate base, COO minus. Now, what happened here? This phenyl part is neutral. Neutral matlab, if needed, it can donate electron to the system if electron withdrawing group is here, and if some other electron withdrawing group, any of the other carbon, then it gives negative resonance. That means it can show plus R also, it can show minus R also. It can show plus I also, it can show minus I also. But since no functional group, either electron withdrawing or electron donating group attached here, so I can say this is almost neutral. Then what happened here? So this carboxylic acid can exist in two resonance forms. So this is one and this is the other part. CO minus and double bond O here. So that means it is delocalized. This electron is delocalized between the two oxygen. And it will show a bit positive R, because if it is there, then it can go here. So it can exist, but not likely. Something like O minus, here C is there, O minus, which is unlikely, but it can show still positive R effect, which means that it is not that much stable. Then let's see second one. Second one is CH3 COOH. Let's see how its conjugate base looks like. CH3 COO minus. So what happened here? This will give plus I and this will also give positive hyperconjugations. That means, so electron is not delocalizing here, rather than electron is enriching this carbon or this oxygen. It means it is less stable. Less stable conjugate means acid is weaker. What is hyperconjugations? You know that C, H, H. I am just discussing for your understanding. Otherwise, you just skip this part. आप इस part को skip कर सकते हो. ये हाइड्रोजन, ये सी, अगर ये इधर चला गया तो ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा. सो डेल्टा पॉजिटिव, सो इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होंगे, ओ माइनस, ओ माइनस. सो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है. सो द conjugation between these two is called hyperconjugations. This sigma bond, sigma electron entering to the vacant pi orbital. So it can be written like that: CH2 double bond C O minus O minus. So three hyperconjugations. So three hyperconjugation is there here. So it is less stable. Next is formic acid. So HCOOH, its conjugate base HCO minus. This is conjugate base of formic acid. So it has no effect. No plus I or minus I, plus R or minus R, any hyperconjugation. So this is neutral. And let's see the last one, phenyl acetic acid. This is phenyl acetic acid, CH2COOH, and its conjugate base CH2, here H will be there, COO minus. This is the conjugate base of phenyl acetic acid. Now you can see here, it has CH2
it will give plus I effect, but not that much as it is giving here, because phenyl tend to pull electron from CH3, so it will not give that much positive I effect. It can give two positive hyperconjugation to this carboxylic acid. Also, it will give hyperconjugations with this phenyl. So it is almost neutral. So how it gives phenyl? So this is C. So I can say this is the same H, and this is C, and double one C. So 2 pi electron is there. So this is 2 pi electron. So it can give here, it can go there, C double bond, C. Again, this is C positive, this is minus, and this again go here, this again go there. So like that, it can give negative hyperconjugation also with the phenyl. So this comes in between this and this. So from this, what we can conclude, that formic acid, it has no plus I plus R minus I minus R. Consider number 1. Acetic acid, this has both plus I and plus R and 3 hyperconjugation. So it is not so stable. What about this? Yes, this is somehow stable than acetic acid and phenyl acetic acid. But is it stable than formic acid? No. Why no? Because this phenyl can supply electron here, so make it unstable. But this is more stable than this one and this one. So this is 2. Why more stable? Because this phenyl is neutral, but this CH3 gives positive plus I and 3 hyperconjugation here, and also it is giving 2 hyperconjugation, positive hyperconjugation is affected with the carboxylic acid, or it is not. So it is 2. Then it should be 3 because of phenyl ring. Phenyl ring tends to withdraw electron from the other carbon. So it has, because of this tendency and because of this minus hyperconjugation effect, where the this hydrogen also tends to go to there. So this should be 3 and this should be 4. This is the least one. A, B, C, D. So this is 1, A is 2, D is 3, B is 4. C, A, D, B. Let's see, where is it? C, A, D, B. You can see here C, A, D, B. So this is the correct answer. So I think you understand idea behind this. There are many explanations of this, but I think that the way I explain is the correct expression as per my 18 years of experience in the field of organic chemistry. मैं ये वीडियो को एक्सटेंड करूंगा. कैसे एक्सटेंड करूंगा? मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा कि सल्फोनिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, उसके बाद कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, सपोज नाइट्रो ग्रुप कहीं पे लगा दो, इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ, इन तीनों में से कौन से एसिडिक ज्यादा होंगे? इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ, कौन से ज्यादा एसिडिक होंगे? उसके बाद इधर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, मिथॉक्सी ग्रुप लगाओ, ओएमई, ये तीनों पोजीशन में ऑर्थोपैरामेटा में कौन सा ज्यादा एसिडिक होंगे? ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेनेशन दूंगा इन डिटेल्स. तो आप फॉलो करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.